No. Abdul Hamid, you remember periodic table? Sorry? No, sir. No. Yeah, don't remember. What about others? Rishita? You revised periodic table, yes or no? Yes, Rishita? Yes. Sorry? Do it daily for a week. Okay. Daily कर रहे हैं ना अब्दुल हमीद? Yes, sir. Daily revise. Okay. What about you guys? Ilham and Amna, revising it daily ना? Lina krapkas par, makka sarbara, बैगन आलू गाजर इन थैला, all of these things Amna? Yes, sir. Yes, sir. याद आपको याद हुआ इल्हाम and Amna? Yes, sir. याद हो गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत काम आएगा. Zoha is also here. Zoha, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. नहीं, जोहा से हम पूछ रहे थे असल में. लास्ट क्लास में जोहा ने एक हर्फ नहीं कहा था. जोहा, ये सुनो, कुछ बोला था आपने लास्ट क्लास में? एक भी चीज? No, sir. क्यों नहीं बोला था बताइए तो. क्या था? घर पे मेहमान थे. घर पे मेहमान थे तो उनको नाश्ता लगाया हुआ था आपने? हम नाश्ता खा लेते क्या? जोहा, आप मैसेज तो कर सकती थी ना, सर आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक टुडे. बोलिए, कर सकते थे या ये भी नहीं कर सकते थे? सॉरी, किया था तो लर्निवियो को कर दिया होगा आपने. No, sir. अरे हमको तो मैसेज ही नहीं आया. ठीक है, लास्ट क्लास में हमको कोई मैसेज नहीं आया. आप देखिए चैट में, तो लर्निवियो को आपने किया, मतलब अभी तो नहीं देख सकते बट आपने लर्निवियो को कर दिया. बस जब भी आप चैट में मैसेज करें ना और ऐसा लगे कि सर तो देख ही नहीं रहे हैं, सर तो मेरी चैट को लगता पढ़ ही नहीं रहे हैं, तब फिर आप एक बार देख लीजिएगा कि आपने लर्निवियो को किया है या सालिम को किया है. ठीक है, या फिर मैसेज सालिम. ओके जोहा, Yes, sir. चलिए, राइट द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी. Concept of valency. Now, valency can be one of two things. Please don't write anything. Leave your pen aside and listen very carefully. Valency can either be. अच्छा नहीं बोला, छोड़िए, तो अलग से लिख के बनाते हैं. Valency. It can either be the number of valence electron. Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, sir. How are you? I'm good. Alhamdulillah. Last class में आप आए थे? आखिर No, sir. रिकॉर्डिंग देखा आपने? नहीं क्यों? सर, यहाँ काम था घर पे. 1 महीने के घर बनता, इसीलिए बहुत डस्ट था, साफ कर रहा था. मॉम डैड की हेल्प कर रहा था. 2 दिन तक साफ ही कर रहे थे? सर, दूसरी पढ़ाई थी, वो भी कर रहा. मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है? है सर. फिर कब करेंगे? आज बैठ के कर लूंगा क्लास के बाद. Okay. See here, we have valency. Okay, so valency can either be valence electron or 8 minus valence electron. है ना? Whichever is less. इन दोनों में क्या हो? इन दोनों में जो भी कम हो. Whichever is less. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, how will see valency के लिए you need to have valence electron. Okay, you should know what is valence electron, then only you will be understanding the concept of valency. Now
if you remember calcium has atomic number 20, and I can write the electronic configuration as argon 4. All of you remember this? Yes or no? Please tell me. Yes, Oh my sir. God. Yes, sir. हाँ yes or no बोलिए. And यहाँ पे हम लोग Yes, sir, लिखेंगे yes, sir. valence electron. हाँ, okay. And यहाँ पे we will write 8 minus valence electron. Right, 8 minus valence electron. And यहाँ पे we'll write the valency. Okay. So what is the valence electron here? In calcium, what is the valence electron? What is the valence electron, guys, in calcium? No idea. भूल गए सब. Ilham, Amna, tell me, guys, what is the valence electron? No idea. Rishita, what is valence electron here? 2. Guys, this is the valence shell revised. I mean, I think you guys are not reading. I think we did this, na? क्या हो गया यार? Octave हो गया, चलिए हटाइए इसको. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब तो कराया था. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बताया लास्ट क्लास में हमने, ग्रुप नंबर वगैरह में. ठीक है, होमवर्क को क्या नहीं किया होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिस नहीं किया. दैट्स इट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, गाइस? टेल मी. Turn your mic on quickly. Tell me what is the valence electron in calcium. What is the valence electron in calcium? बोलो भाई. What is the valence 18. electron in calcium? It is, oh my God. Sir, 4. 5 minutes दे रहे हैं. Giving 5 minutes. Sir, 4. No, not 4. Giving 5 minutes. Revise the last class and tell me what is the valence. Once you understand what is the valence electron, for sure, शेयर ही कर देते हैं स्क्रीन. आप हमको चैट पे बताइएगा. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है. इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगेगा? कितने लोगों ने होमवर्क किया था बताइए तो जरा. ऋषिता का होमवर्क आया था जहां तक हमें लगता है. ऋषिता, यू सेंट दी होमवर्क, राइट? 2 electrons. चैट में भेजिए, आंसर चैट में भेजिए, जो भी आंसर आ रहा है आपको. ऋषिता ने दिया है. और फिर ओके ऋषिता, कहाँ तक किया ऋषिता आपने असाइनमेंट? The electronic configuration and types of elements. सारे सवाल हो गए? कोई दिक्कत नहीं आई ना? इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल. हाँ सर. ठीक है. ग्रुप नंबर वगैरह में तो फिर आपको मतलब चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां से क्लियर हो जाएगा. अच्छा आकिब, ओके आमना. Abdul Hamid, I just want to repeat, it is valence electron. Valence electron. Khadija, assalamu alaikum. How are you? Yes, I'm fine. You were present in the last lecture? Yeah. Okay. So then send the answer. What is the valence electron in calcium? We'll send the answer in chat. Zoha, did you send the answer? Zoha, did you send the answer? इल्हाम ने ऐसे किया. इल्हाम 10th में है क्या आप? हाँ इल्हाम. Sorry, Are you sir. I in 10th? thought that way. चलिए ठीक है. हाँ अब्दुल हमीद अब सही है. जोहा फिर से कुछ जवाब नहीं दे रही है, फिर से कुछ मेहमान आ गए लगता है. खैर, here we will be having 2, right? Valence electron is how much? 2. What you are going to see? You are going to identify the valence shell. 4. How many electron in the 4th shell? 2 electron in the 4th shell. Now 8 minus valence electron will be equal to 8 minus 2 is equal to 6. Now which is lesser, 2 or 6? Which is lesser, 2 or 6? 2. So valency क्या हो जाएगी? 2. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Khadija, Ilham, Aqib, Amna. Yes sir, no sir, tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, thank you very much. Now, listen, next one. Fluorine, the atomic number for fluorine is how much? 7, right? Or 9? 9. 17 याद आ रहा था क्लोरीन का मैं, ठीक है, चलिए. For 7, what we are going to do? For 9, 1s2, 2s2, 2p, how much? 1s2, 2s2, 2p, 2p. ये बोलो भाई. 1. 2p1. अरे काउंट द इलेक्ट्रॉन्स भाई, क्या हो गया आप लोगों को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं. 2p 6. नहीं मैंने पढ़ने का किसी का क्या? अरे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार, आप लोग बिल्कुल मेरा सर ये कर रहे हैं. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 कर, बताइए फिर तभी होगा. रिवाइज ही नहीं किया है लग रहा है आप लोगों ने, तो ऐसा लग रहा है रिवाइज ही नहीं किया है. Abdul Hamid, did you do the homework? Yes, sir. I didn't send it though. Amna, what about you? Homework किया आपने? Amna? Amna, did you do the homework? Sorry? What did I say? Ilham, did you do the homework? Yes, sir. You sent it to Learnivio? No, sir, I didn't know we had to send it there. Okay, you sent it to Learnivio WhatsApp, okay? Okay, sir. Okay, sir. Khadija, what about you? Yes, sir. You sent it to Learnivio? No. You will send it, okay? Fine. Rishita, if you got the electronic configuration, you got the electronic configuration, Rishita? Yes, sir. You got the valence electron? Yes, sir. So try to write what is the valence electron, and in the chat you will tell me the valency of fluorine. Others, all of you got the electronic configuration of fluorine? Abdul Hamid, Amna, Afib, Ilham, Khadija, and Zoha. Yes, Ilham saying very good. Abdul Hamid, can you please turn your mic on? Sir, 7. What 7? What is 7? Electronic configuration 7 है? क्या 7 है बताइए? Okay. Electronic config. Abdul Hamid, can you please keep your mic on? थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है ना? क्या पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कैसे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Abdul Hamid, electronic, you don't remember? No, sir. Abdul Hamid, ठीक है, ऐसा बोलिए ना, फिर नहीं याद है आपको, अब ऐसा बिल्कुल. इल्हाम, चलिए सही है इल्हाम, वेरी गुड, ठीक है. सी हियर गाइस, 9. सो स्कूल पब्लिक स्कूल याद किया आपने अब्दुल हमीद? हाँ सर. अब्दुल याद कर लिया? बताइए क्या है स्कूल पब्लिक स्कूल बोलिए. श्वेता, करेक्ट, वेरी गुड. School, public school, Delhi public school, Delhi public. नहीं याद किया आपने, नहीं याद किया आपने. बाकी लोग इन सब का निकालेंगे. अब्दुल हमीद, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना. आप ठीक पढ़ रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया आपको? ना आपने होमवर्क भेजा, ना आपने रिवाइज. आपने पढ़ा नहीं है ना लास्ट क्लास के बाद? केमिस्ट्री पढ़ी है आपने? मेरे नोट्स पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़ा ना? दिख रहा है आपको? हाँ. है ना? ठीक है, चलिए. ऐसा रेगुलर नहीं होना है ना, तो बहुत दिक्कत होती है. मतलब बहुत दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब लेकिन हमको बहुत दिक्कत होगी. आप अगली क्लास में कुछ आंसर ही नहीं करेंगे, है ना? कवर कर लिया जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. एक दिन बैठिए, आधा 1 घंटा कवर हो जाएगा, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p, 5, ठीक है. तो 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन. नाउ वैलेंस शेल कैसे देखते हैं? द हाईएस्ट नंबर ऑफ n. सो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, राइट? So this is the valence shell, second shell. In the second shell, we have 2 plus 5, 7 valence electron. 8 minus valence electron will be 8 minus 7, which will be equal to 1. And valency will be equal to 1, whatever is smaller.
Now try this phosphorus, oxygen, and boron, and give me the valency. This is first question, second question, third question, fourth question, and fifth question. Take 5 minutes for this, okay? No, Amna. Amna, listen. You have sir. phone with you. You have your phone with you. Yes. So once you are done ना, आप एक बार बस हमको फोटो भेज दीजिए, ठीक है? No need to Okay, sir. type all of those things. ना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? आप सारा कीजिए, फोटो भेज दीजिए. कौन आया? Oh my God, Teja is so late. Teja ने mic पे Akib, no need to write the electronic configuration. Write the electronic configuration, identify that valence electron, then valency. Okay. Either just send the valency to me or send the whole thing on my WhatsApp. Okay. So we have to send only the valency and valence electron. No, if you want to send the valency, no, send me the whole thing on WhatsApp. No, if you are doing any mistake, then I will come to know that also, right? That is why send everything on WhatsApp. Once you are done, click a photo, send it to me. Okay, sir.
has sent. Rishita, am I audible, Rishita? Yes, sir. बताइए, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, देखिए थोड़ा आपने फोटो कैसे भेजा है। I'll send it again, sir. हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर भी I'm seeing the answers. Chlorine is fine, phosphorus is fine, oxygen correct, very good, and boron also correct, very good. 5 minutes is over, guys. Send me whatever you have done. Send me whatever you have done. Assalamu alaikum, Khudeja. How are you? Khudeja, how are you? Am I audible? Ilham, you don't have phone right now? No, sir, I don't have a phone with me right now. Okay. Can you explain the phosphorus answer? What is the definition of valency? Yes, Ilham. Why are you getting 2 valency? Tell me. Ilham. Ilham, I'm asking something. Can you please turn your mic on and explain it to me? अरे चुप क्यों हो जाते हैं बच्चे? कॉपी किया है आपने इल्हाम कहीं से? इल्हाम आपने कहीं से कॉपी किया है? No, sir. तो बताइए कैसे लिखा आपने 3 and 5? बोरॉन में भी तो 3 आ रहा है, वहां पे आपने क्यों नहीं, या फिर क्लोरीन में भी तो 7 आ रहा है, वहां पे क्यों नहीं हम लोगों ने लिखा दोनों चीजें? Why did you write 3 and 5 in phosphorus? So because वो valency of 3 for phosphorus, क्योंकि वो to completing its octet, और फिर 5 है because वो I don't know how to say, sir. क्या है valency बताइए? What is valency? Do you remember it from somewhere or you have copied? There is one of. So I have not remember, taught this. You so I remember it from remember somewhere. it. I remember it from school. That's why I wrote that. Fine. But tell me, can you याद नहीं रहेंगे, ठीक है ना? वो तो आप कभी आपने पढ़ा होगा या फिर अभी नोट्स आपके सामने हो तो आपको याद है 3 और 5 आपने फॉस्फोरस के लिए करे। Yes, sir, कहाँ notes करना नहीं, है? but I अच्छा, सर remember it from school because they made a table for us to remember the valency. So हाँ, यही नहीं करना है ना वैलेंसी के लिए, ठीक है? okay, अभी okay. याद कर लिया आपने, चलिए ठीक है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद क्लास 12 तक तो नहीं याद रहेगा ना। तो वैलेंसी के लिए ये स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से ना, व्हिचएवर इज लेस दैट इज वैलेंसी। तो क्या होगा 3 और 5 में से? बताइए 3 और 5 में से क्या हो जाएगा वैलेंसी? So 3. Sorry. 3 3 सही तो है, व्हिचएवर इज लेस ना, व्हिचएवर हाँ, इज लेस। less. So phosphorus will be, where should I start phosphorus from? Tell me guys. Phosphorus will be starting from neon, right? Neon, and it will be 3s2 3p3. So 3s2 it is going to be valence electron is how much? 3 plus 2 5, and 8 minus valence electron 8 minus 5, it is equal to 3.
valency will be equal to 3. Oxygen, it will be again 1s2, 2s2, 2p, 4. Valence electron 4 plus 2. 2 second shell is valence. 4 plus 2 is 6. 8 minus 6, it is equal to 2. Valency is 2. Boron 1s2, 2s2, 2p, 1. Second shell, valence shell, valence electron 2 plus 1, 3. 8 minus 3 is equal to 5. Valency will be 3. All of you got this? Yes or no, please? I have got message from a few people. I don't know whose number is this. ये नंबर तो किसका नंबर है? आमना और एक किसी ने भेजा है, खदीजा है, इसका है ये। सर मेरा है। आपका है? हाँ 4645। हाँ वही। अच्छा ठीक है, आपको देख लीजिए आंसर सही है। नहीं मेरा लास्ट वाला रॉन्ग है गेस। समझ में आ गया कैसे रॉन्ग हुआ? हाँ व्हिचएवर इज लेस है ना, पी लेस है हाँ ना। लेस वाला। हाँ ठीक है, आमना, आमना, you understood this? Yes or no, tell me. Yes, sir. Also, see, there is no comma in between. Okay, Yes. okay, आमना, थोड़ा ध्यान रखना उसका। वैसे बहुत भारी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब केमिस्ट्री नहीं आती आप। ठीक है, ऐसा शो आती है आपको, हम बोल रहे नहीं आती है, लेकिन आप लिखेगा ना तो जो आदमी देखेगा ना उसको उतनी केमिस्ट्री नहीं आती। ठीक है, चलिए अब एक हम ऑब्जर्वेशन आपको बताते हैं जिसकी वजह से आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। नाउ नो नीड टू राइट, टेल मी कैल्शियम इज इन विच ग्रुप? लुक एट द लास्ट क्लासेस, how to remember all the periodic table. In that, calcium is in which group? Tell me. We have done group wise na, so calcium is in which group? Group 2. Group 2. And what is the valency of calcium? 2. What is the 2? Correct है ना? And what is the valence electron? बता दीजिए कम से कम calcium का valence electron कितना? How much is the valence electron? 2, right? Yes sir. Fluorine group number. Fluorine group number is, group number for fluorine is group number for fluorine, देखिए जल्दी देख के बताइए। Group number for fluorine. 17. Sorry? 17. 17. What is the unit digit in 17? What is the unit digit in 17? Ones place. What is in the ones place? 17 ones place. बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं? तुम मेरा दिमाग बिल्कुल पागल हो जाएगा। ऋषिता, आंसर आ रहा है, बोलो ना भाई। 17 में वंस प्लेस में क्या है? What number is there in ones place of 7? Ones place भाई, maths ones place, class 11, क्लास 11 बोल रहे, क्लास 1 2 3 में पढ़ा ना, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। 17 के वंस प्लेस में क्या है? 7. थैंक यू। इतना यार तुम लोग, हम नहीं पूछेंगे फिर बताएंगे, लिखाने पे आ गए हैं, अगर समझाने वाले नहीं, फिर हम इस तरह से आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा। All of you turn your mic on and tell me what is the unit digit of 17? 7. 7. And what is the valence electron? Valence electron is 7. 7. Okay. Phosphorus, tell me the group number of phosphorus. Sir, Group 15. number of 15. What is the unit place of 15? What is the Five. unit place? 5. आमना, आपको यूनिट प्लेस नहीं पता, आकिब को यूनिट प्लेस नहीं पता क्या होता, खुदेजा को यूनिट प्लेस नहीं पता क्या होता है ना? What is the unit place of 15? 5. All of you keep your mic on. 5. हाँ, Five. all of you keep your mic on. हाँ ठीक है, आप लोग ऑन है। खदीजा कौन है? आमना, आकिब, खुदेजा, ऋषिता, जोहा, कीप योर माइक ऑन, तो पता चलेगा ना कितने बच्चे हैं क्लास में। नहीं, आकिब नहीं है, ऋषिता माइक, आकिब, खुदेजा एंड जोहा, these are not there in class.
आसिफ, Uteja, and Zoha are not replying. It seems they are not in class. Please call their parents and confirm. Tell me now, what is in the units place of 15? 5. 5. 5. 5. No, keep your mic on, Akif. I don't mind the noise. Keep your mic. Fine. Now, what is the group number of oxygen? The valence electron is also 5, na, for phosphorus. You can see. What is the group number for oxygen? 16. Valence electron. 6. 6. What is the group number for boron? 13. 13. And valence electron? 3. You can identify a pattern. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Right? Now, we do not need electronic configuration, right? I will write a element and you will tell me the valence electron. Correct? Yes or no? Yes. Yeah. Okay. So let me write aluminium. You don't even need atomic number. You should just remember the group number, right? And you remember, I have taught how to remember the complete periodic table. And from periodic table, you will get the group number. From group number, you will take the valence electron. Tell me, what is the group of aluminium? In the chat, आप लोग बताएंगे, ठीक है? Don't speak now. No, don't speak. Chat. माइक ऑन रखिए, माइक ऑन करते हैं क्या है? अब्दुल हमीद नहीं, ग्रुप नंबर देखो यार, आपने सही से लिखा भी नहीं है क्या? इल्हाम नहीं, लुक एट द ग्रुप नंबर. इल्हाम, अब्दुल हमीद, क्या हो गया यार, आप लोग ने सही से लिखा नहीं है क्या? कल कराया था ना लास्ट क्लास में. कहाँ है एल्यूमिनियम? ग्रुप 3 में. ग्रुप 3 तो है ही नहीं. कहाँ है ग्रुप 3? ग्रुप पूछ रहे हैं ना हम. हाँ, अच्छा, आप लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी, माय बैड, सॉरी. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3. हाँ, सबका 3 आ गया. ठीक. 7. Let us suppose I'm talking about क्लोरीन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, है ना? क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इल्हाम सही, वेरी गुड. क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यस ऋषिता, करेक्ट. यस अब्दुल हमीद, करेक्ट. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7. So valency will be 8 minus 7, that will be equal to 1. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Abdul Hamid, you are written for gallium. Gallium correct करते हैं, very good. Valence electron. ठीक है, बाकी कीजिए and send the answer, है ना? अभी आपको देते हैं हम और 2 मिनट. 2 मिनट नहीं, 3 सवाल है, 3 मिनट कर लीजिए. गैलियम तक का हो गया. हाँ, wait a second. Amna, can you please turn your mic on? Yes, sir. ये 5 आपने किसके लिए लिखा है? गैलियम के लिए. गैलियम के लिए आपने 5 लिखा है. देखिए फिर से. Sorry, sir. Sorry. ऋषिता सही है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं हम. गैलियम के लिए क्या हो जाएगा? यस अब्दुल हमीद, वेरी गुड. गैलियम के लिए क्या हो जाएगा? आमना नहीं मिला, आमना को. Sir, नहीं आया. नहीं मिल रहा है. बैगन आलू क्या है बताइए? बैगन आलू, गाजर.
गाजर, कौन सा आ गया फिर? 13 में आ जाएगा, है ना? तो 13 यानी वैलेंस 13. इलेक्ट्रॉन विल बी 3. ओके, So 8 minus 3. हाँ 8 minus 3, नहीं 8 minus 3 तो ये 5 होगा, बट 3 विल बी द वैलेंसी, जो Okay. छोटा होता है उसको, है ना, छोटे वाले को, Okay, है ना, sir. इसमें से जो छोटा होगा. सिलिकॉन के लिए क्या आ जाएगा? सिलिकॉन के लिए देखिएगा तो 4 आ जाएगा, है ना, 4 में 4 ही रहेगा. पोटेशियम में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 1. Yes, sir. गॉट दिस? एसएनो प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so write a point here. Valency gives an idea about combining capacity of an atom. Okay, check. Now let us look at the periodic table blocks. So we have S, P, D, S block, P block, D block, and F block. So we are going to look at, first of all, S block. Please write the topic. S block elements. Ilham, you understood now that it does not require any memorization, the valencies, yes or no? Yes, Ilham. Ilham is not here. Ilham, am I audible? किसने लिखा था 2, 3 और 5 वाला? इल्हाम ने लिखा था, किसने लिखा था? नहीं, किसने लिखा था? हाँ, इल्हाम ने. You understand now that valency yes. does not require memorizing. Okay, you Okay, just need to sir. have an idea about valency. Okay, right? sir. Right here, S block element. In So S we have block to write element, this? please write this with me. Okay, sir. It is composed of two groups. As each subshell can have two electrons. Okay, so S subshell में कितने आ सकते हैं? As each S subshell, sorry, as each S subshell, not subshell, as each S subshell. As each subshell can have two electrons. Number one, group 1 elements, और अच्छा, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स. क्या बोलते हैं इनको? अल्कली मेटल्स. बताइए अल्कली क्या होता है? व्हाट इज एन अल्कली? Bases dipped in water. Metal. Bases soluble in water. हाँ, अरे वाह, ऋषिता को 10th क्लास में याद है. 10th क्लास में है ना ऋषिता? हाँ sir. अल्कली है ना 10th क्लास में? व्हाट आर अल्कली? अल्कलीज आर Bases which are soluble in water. हाँ, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. यानी कि पानी पे डालने में क्या मिलेगा? If I add water to these metals, what I will get? Alkali. A solution. A basic solution, right? Yes or no? Yes. Correct. Yes, sir. Alkali means they increase the concentration of OH negative when added in water. यही मतलब है ना? When added in H2. Now metal का मतलब होता है they have tendency to lose electron.
So these are alkali because they increase the concentration of. Now, are we understanding their properties also? Yes or no? Please tell me. Correct. Yes, sir. Next, we have group 2 elements. They are known as alkaline earth metals. Alkaline, we have already seen alkaline, alkali, they have same name. Okay. Now, earth metal also, we know that they'll have a tendency to lose electrons. Earth metal means, now, earth metal because magnesium, calcium, etc. These were some elements which are found in Earth's crust. Got it? Isn't please tell me. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, let us. लिखा नहीं था क्या किसी ने? लिख लीजिए, लिखा नहीं तो. Is there someone who is still writing? Is there someone who is still writing? No. No, sir. Right, number 1. Group 1 elements. Okay. So here I will be writing the period numbers. In group 1, I will have first period. In first period, I will have hydrogen. Second period, I will have lithium, sodium, linak, rub, cus, copper. Sodium will be in third, fourth, fifth, sixth, and seventh. Okay. Hydrogen atomic number is 1, lithium के लिए 3, sodium के लिए 11, 19, 37, 55, and 87. If you want to write the electronic configuration, this will be 1s2, sorry, 1s1, my bad. This will be 1s2, 2s1, 3 electrons. For 11, I will start with neon. Neon, and after neon, we will have neon is second noble gas, so we'll start with 3s, and 10 electrons are there in neon, so 1 electron here. Then 19, nearest noble gas before 19 is argon with 18 electrons. Argon is third number. Argon is the third noble gas, so I will start with 4s1, and it is over, right? And then you will continue this part. General electronic configuration here. General electronic configuration. Then it is NS1. And what is N here? N, it is equal to the period number. Right? Second period में देखिए, general electronic configuration means the outermost electronic configuration. Okay, outermost electronic configuration क्या है? 2s1, 3s1, 4s1. So it is NS1, where N is equal to what? N it is equal to the period number. 2 का 2, 3 का 3. Okay. Next, valence electron is equal to 1. Valency, it is equal to 1. And since its general electronic configuration is NS1, I will write this in bracket NS1. All of you got this? Yes or no, please? Yes, sir. Write this down quickly. Yes, sir. You will complete this part. Okay, you will complete this part. It's very easy. Argon के बाद preference for 5s1, 6s1, 7s1. Then everyone, yes or no, please tell me. तुमने लिख लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. Right. Yes, sir. Second. Okay. Second one is group 2 elements. सर बड़ा अच्छा, इनके नाम भी हम लिख देते हैं ना. बेरिलियम, magnesium, calcium. This is strontium. Ba is barium and radium. Okay, beryllium is 4, magnesium is
12, calcium is 20, strontium will be more 18, 38, and then 56, 88, 56, 88. ठीक है, 56, 88. Electronic configuration 1s2, 2s2, नियॉन, 3s2. तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा देखिए, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, we will complete this now. General electronic configuration क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, what is the general electronic configuration? ns. How many electron in ns? -2. ns2. And what is n? Period number. And valence electron how much, tell me guys? 2. And valency how much? Valence electron how much? अरे what is the valence electron here? ns2 है ना, valence electron 2. 2. ग्रुप 2 है ना, तो 2 होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी विल आल्सो बी 2. ग्रुप 2 याद आया आपको? ठीक है, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है हमारे पास एस ब्लॉक. ऑल ऑफ यू रोट दिस डाउन, यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. You have to Yes, sir. complete this, okay? Electronic configuration complete कीजिएगा प्लीज. अच्छा यहाँ पे देखिए. So for S block elements I can write the electronic configuration for S block will be n s में या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन, ns1 to 2. Please write this down. And I did not write it that time because we did not know what is ns and what is 1. So now you understand what is n and what is 1s. So ns in S block element, the outermost electronic configuration of any of the S block element will either be ns1 or it will be ns2. That's the meaning of ns1 to 2. Right, next the P block elements. P block elements, bracket में लिखिएगा ns2, np1 to 6. We will see how it is going to be there. Okay, but now you understand what I am writing. I am writing the general electronic configuration. All the P block elements will have ns2 and np1 minus 1, not 1 minus 6, 1 to 6 will be there. Okay, now right, first of all it is composed of 6 groups. It is composed of 6 groups as the P subshell can hold can hold 6 electrons. From group 13. 13 में बहुत, you will see many types of writing as 3A or 3A like this, to group 18. 18 will be written as 5, 6, 7, 8A or 18A, है ना, इस तरह से कुछ लिखा है, और 8A. Write here note. It contains non-metal, metalloid, and metals. ठीक है, नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड, फिर मेटल. ठीक है, इज राइट. एलिमेंट्स above metalloid are non-metals and below are metals. ठीक है, right, next metalloids. ठीक है, मेटलॉइड्स क्या क्या है? बोरॉन, लेकिन बोरॉन का कोई काम नहीं होगा बिकॉज बोरॉन से ऊपर ना यू डोंट हैव एनी एलिमेंट. ठीक है, तो जनरली बोरॉन अगर आपको नहीं भी आता तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है बिकॉज बोरॉन से पहले कोई
बट कोई भी एलिमेंट नहीं. दैट इज व्हाई आफ्टर बोरॉन एवरीथिंग इज मेटल. एल्यूमिनियम, गैलियम है सब कुछ मेटल है. बोरॉन, silicon is metalloid. So silicon, before silicon we have carbon, and after silicon what do we have? We have germanium. जो germanium is also metalloid. So silicon and germanium are metalloid. Cassie, Geet, है ना? Both of these are metalloid. And since both of these are metalloid, then what is going to happen? Below germanium will be metal, above silicon will be non-metal. Next is arsenic, antimony, tellurium, and polonium. Okay, so all of these are what? Metalloids. Above these elements will be non-metal. Below these elements will be metal. Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. I think in class 10th you had metals and non-metals. You must have learnt about metalloid there. Yes or no? In class 10th you have, right? Metals and non-metals. After Yes, sir. acid. यहाँ गांव में हमको 10th भी पढ़ाना पड़ता है ना. कुछ बच्चे जो 10th पढ़ते हैं तो हमको पता है. So, you scroll up 1 second. अच्छा अच्छा अच्छा. Okay, sir. लिखिएगा यहाँ ग्रुप 13. We'll start with group 13. ठीक है. Group 13 elements. We also call this boron family. क्या बोलते हैं इनको? Boron family. Now, please see here. In boron family, we will have बैगन, आलू, गाजर, in thala. So boron, aluminium. This is gallium, indium, thallium. Atomic number 5. उसके बाद 13, 31. इसको ऐसे याद रखिएगा ना. एल्यूमिनियम का याद तो गैलियम का भी याद. Then you will have 49 and then you will have 18. ठीक है. 31 and then you are going to have 81. Done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. You're done. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p1. Here you will have neon, 3s2, 3p1. Here we will have argon, 4s2, 3d10, 4p1. Then for indium you will have krypton, 5s2, 4d10, 5p1. Karo Xerox and Xerox, xenon, you will have 6s2, 4f14, 5d10, and then you will have 6p1. Okay. So this is the electronic configuration. Now, if you look at the valence shell here, then here the valence shell is 2s2, 2p1, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1. 3 is inside. 3 is not in the valence shell. Okay. 5s2, 5p1. 5 is the valence shell. Largest number, na? So 6 here and 6 here. All of these are internal. Outer electronic configuration, that means the general electronic configuration will be equal to ns2 is on in all of the cases, and np1 is also in all the cases. Valency, valence electron first of all. So 2 plus 1 will be equal to 3. And group 13 है तो तब भी वहाँ पे 3 होगा. Valency will also be equal to 3. All of you got this question? Please tell me. Yes. Yes, sir. ठीक है. अब इस तरह से आपने ग्रुप पी ब्लॉक का देख लिया कैसे करना है. You are going to do from homework. Similarly, complete the P block. Elements. Got this? Please tell me. Yes, sir. कर लेंगे ना. Yes. कोई दिक्कत होगी? You have my WhatsApp number. You will message me. Okay.
Sir, I'm having Yes, sir. problem in this group or this element. I'm having problem in the general electronic configuration. Okay, you will message me. But all of you have to do this. ऋषिता, आप याद दिलाएंगे अगले क्लास में पूछने के लिए? सर, आपने कुछ होमवर्क दिया था? Yes, ऋषिता, you will remind me. Yes. Yes, sir. Thank you. Right, let's D block elements. Okay, so for D block elements, you don't have to learn too much here. You just remember the general electronic configuration. We don't have to look at this group wise, general electronic configuration. It is NS. NS you will have 1 to 2 electrons, because if you remember, chromium and copper, they have NS1. They have 4s1. And then you will have N-1, D, 1 to 10. This is the general electronic configuration. For example, if you remember copper, 29, argon, 18, then you will have 4s2, sorry, 4s1, 3d10, right? But if you see manganese, then this will be 25, and here will have argon, 4s2, 3d5. ठीक है? तो S में 1 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. And N-1, D, that is 1 to 10. Please write next. These are called transition elements. Or sometimes they are also known as transition metals. है ना? एक ही चीज है. The D block has 3 series. The D block has 3 series. अभी आप देखिएगा तो आपको 4 सीरीज नजर आएंगे, है ना? वो लेकिन 3 सीरीज ही पढ़ने के लिए है. बाकी जो 4th सीरीज में एलिमेंट्स है, they are very radioactive and they are very reactive. That is why nobody has studied those elements. 3 ही आपको पढ़ना है. 3D series, 4D series and 5D series. Class 12th में you have a chapter D block elements. There you have to learn in detail 3D, 4D and 5D. लेकिन अभी कुछ नहीं करना. अभी बस नाम जाना है. 3D होता है, 5D होता है. ऐसे करके जो है ना, जहाँ पे 3D में if you're 3D series क्यों बोलते हैं? Electrons are filled. 3D subshell. Scandium 4s2 3d1. Titanium 4s2 3d2. है ना? Vanadium 3d3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till zinc. It is being printed in the 3D subshell. That is why it is known as 3D series. Understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Anji. Okay, right. Next properties. Number 1, high melting point and boiling point. Except Hg. है ना? Hg, mercury is liquid in. Mercury is liquid at RT. What is RT? Room temperature. Room temperature. Room temperature. They form colored compounds. Third is they show variable oxidation state. They show both used as catalyst. Understood this? Please tell me. Yes, sir. Right, next, F block elements. पहले हम ना, F block elements है. Chromium और copper, these are the two
एलिमेंट्स विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? कौन-कौन से? क्रोमियम एंड कॉपर, जो आप याद करें. बट इन टोटल देयर आर 10 exceptions in D block elements, and I think there are 10 exceptions in the F block elements, as I remember. और फिर वो सारे के सारे को हम पढ़ाते थे पहले, लेकिन फिर हमने देखा कुछ फायदा है नहीं, ना आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ना ही किसी और के एग्जाम में पूछा जाने वाला है. एंड नीट के लिए जो लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा. नीट में कभी आ सकता है ना, तो जानकारी के लिए होना चाहिए आपको, ठीक है? लेकिन अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वही, बिकॉज ऑफ दोस एक्सेप्शन व्हाट हैपेंस, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 n-2f 1 से 14, ये तो फिल होगा, ठीक है? और n-1d, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है और 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है. 0 से 2 तक इट विल vary from 0 to 2. This is the general electronic configuration of F block elements. Right, next, it is composed of two rows. Number 1 is known as lanthanides, or lanthanide. They are also known as rare earth element. Rare earth elements. Second लिखिए actinoids. और actinide, also known as, छोड़ दिया इसको, ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं इसको, छोड़ दिया, ये आपको याद रखने की जरूरत. रेयर एलिमेंट इसके ब्रैकेट में से लिख दीजिएगा. इट गोज फ्रॉम सीरियम, लुथेनियम. सीरियम has atomic number 58 and lutetium has atomic number 71 Lu, and these are radioactive. It goes from thorium, which is 90, till lawrencium, I think it is Lr103, lawrencium. This is lutetium. Right, next. Elements. Sir, LR क्या है? Lr is lawrencium. Lr is lawrencium 03. Elements after यूरेनियम. अरे कोई देखा अभी तक ओपेनहाइमर, या अभी तक किसी ने नहीं देखा? आफ्टर यूरेनियम 92 देखा सर. देख लिया आपने? कैसा लगा? यस सर. सो गए? सो गए थे देखते देखते? नहीं सर. क्या लगेगा, फिर से केमिस्ट्री क्लास में आ गए? हाँ, बताइए क्या फिजिक्स था? सारा तो आइसोटोप है, न्यूक्लियर फिजिक्स है. हाँ ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स है. ओपेनहाइमर का जो पीएचडी रहता है वो किसमें रहता है? यहाँ से पीएचडी इन केमिस्ट्री है थी. ओपेनहाइमर का नहीं पता. क्वांटम फिजिक्स. ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में रहता है जहाँ तक कुछ ना कुछ उसकी क्वांटम फिजिक्स में सही मालूम है. He has a bachelor's degree in chemistry from Harvard University. So tell me, कौन कौन से टाइप के गन, कौन कौन से टाइप का था एटम बम? एक तो था गन टाइप, अनरक्षिता. दूसरा हाइड्रोजन टाइप का बम. नहीं, हाइड्रोजन था ही नहीं. हाइड्रोजन बम तो बाद में हुआ ना. हाँ पर वो the idea was born in that time. हाँ लेकिन वो फ्यूजन वाला आइडिया था.
कि अगर मतलब अगर इतना ज्यादा इंटेंसिटी से ब्लास्ट हो जाए तो कहीं फ्यूजन रिएक्शन ना होने लगे, और फ्यूजन रिएक्शन होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाए, वो तो बाकी चीज है। लेकिन एक तो गन टाइप था मॉडल, और दूसरा मॉडल यूरेनियम का जो सोवियत यूनियन ने बनाया था, आई मीन ऑलमोस्ट अबाउट। अरे अच्छा ठीक है, नहीं फिर पता नहीं, हमने नहीं देखा अभी, लेकिन आई नो, वो लगा बताया वो मैंने। गन टाइप मॉडल पता है आपको, उसमें बताया गन टाइप क्रिटिकल मास अटेन करने के लिए। नहीं सर। नहीं छोड़ो यार, नेट पे ये बॉम्ब बॉम्ब बताना नहीं सही है ना, है ना, नेट पे ऐसे बॉम्ब बॉम्ब बताना सही, तो यूट्यूब में अपलोड होता है ना। डन एवरीवन, यस और नो, प्लीज टेल मी। है ना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। क्यों ट्रांस यूरेनियम? एक एक एलिमेंट के बस एक एक मिलीग्राम नैनोग्राम मटेरियल अवेलेबल है, इसके बाद के यूरेनियम के बाद जितने भी है ना, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट आर मैन मेड। इज इट ओपेनहाइमर? क्या ओपेनहाइमर? अब्दुल हमीद? वो जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ओपेनहाइमर के बारे में बात करें, आपने देखी? अच्छा, नहीं नहीं नहीं। आपने नहीं देखा है? नहीं तो ओपेनहाइमर ही तो पूछ रहे, तो ओपेनहाइमर देख रहे थे। नहीं, मैं स्पेलिंग पूछ रहा था कौन सा है। स्पेलिंग? क्या स्पेलिंग? स्पेलिंग की बात नहीं करते। अच्छा, ओपेनहाइमर की स्पेलिंग पूछ रहे हैं आप? वही है ना, वही वही पूछ रहा। अच्छा अच्छा, हाँ यही ओपेनहाइमर की स्पेलिंग। स्पेलिंग हाँ, क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? स्पेलिंग गूगल से पूछा कीजिए, ठीक है। ऐसे भी मतलब नाम जर्मन नाम है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स exhibit variable oxidation state. Done everyone? Is please tell me. Yes, sir. Acha, by the way, did you guys leave any space for this homework? Complete P block elements. Sir, I left 2-3 pages. ठीक है, ये देख लीजिए, it's taking how many lines? It is taking 1 2 3 4 5 6 7 lines, right? So 7 तरह से आपके पास you have to make 7 more 49 lines लीव करने हैं। तो एक शीट पे देख लीजिए कितने लाइंस हैं आपके, उस हिसाब से प्लीज लीव द स्पेस। इफ यू हैव नॉट लेफ्ट, लीव इट नाउ। ठीक है, अभी लीव कर दीजिए पेज, एंड आफ्टर लीविंग दैट मेनी पेजेस राइट द टॉपिक, राइट अनदर होमवर्क। Limitations of periodic, modern periodic table. Okay. After this, right, periodicity in properties. Periodicity in properties, right? Repetition of similar properties. Repetition of similar properties after certain interval
after certain regular intervals is called periodicity in properties. Okay, so when the things get repeated, the properties get repeated after certain interval, that is known as periodicity in properties. And what is the cause of periodicity? Please write. Cause of periodicity. The cause of periodicity is similar outer electronic configuration. Similar outer electronic configuration coming at regular intervals. Coming at regular intervals. We have seen this. See, in S block element, you go from beryllium. After beryllium, you will have what? Boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Then you will have what? Sodium, magnesium. So magnesium में जैसे आए फिर से वही same चीज repeat. Then you will go, and then calcium again. The property will be repeating. And why it is repeating? Because they are having similar electronic, outermost electronic configuration. So that is the cause of periodicity. Cause of periodicity is similar outer electronic configuration coming at regular intervals. That means this outer electronic configuration is very important. It is the most important thing in chemistry. And that is why the position or the address of electron was very important in quantum numbers. Now, when we did quantum numbers, it was address of electron. Take it right next. Elements with similar property occur at intervals of पहले 2 के बाद आ जाएंगे, फिर उसके बाद 8 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी, फिर अगेन 8 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी, देन 18 एलिमेंट्स के बाद सेम प्रॉपर्टी, देन 32 एलिमेंट्स के बाद सेम प्रॉपर्टी, देन सो ऑन, है ना. उतना आगे आपको जानना नहीं. 13 तक ही पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा. और इस नंबर को ना जनरली मैजिक नंबर बोलते हैं. मैजिक नंबर. Let me know once you're done, guys. Then everyone, you please tell me. All of you wrote this? Yes, sir. Yes, sir. Right, next. Now, periodicity in properties we are learning. So what are the properties that will be repeated after regular interval? Okay, so the properties are please write. We have to learn certain number of. First is आराम से रहिए भी, है ना. हम आपको सारा लिखाते हैं.
अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। मजा नहीं आया। Yeah, so we have to learn how many properties, tell me. बताइए कितने प्रॉपर्टीज पढ़ना है? फर्स्ट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Effective nuclear charge. Second one is atomic radius. Now, in atomic radius, we will also learn ionic radius. Then we have ionization enthalpy or ionization energy. Enthalpy क्या है? Enthalpy is energy which is measured at constant pressure, है ना? थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, एनर्जी और एंथैल्पी दो चीज होती है, दोनों सेम नहीं होता है, बट मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है दोनों, ठीक है? एंथैल्पी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज एनर्जी विच इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Okay, so pressure can change here, but the volume will not change, and this is generally used by physicists. Physicists, they control the pressure, है ना? They they can control the volume and they don't control the pressure. Now enthalpy, this is generally used by chemists, and chemists, they do everything in laboratory. In laboratory, the pressure is 1 atm, right? Normal pressure, atmospheric pressure is 1 atm. So in this case, in enthalpy, what is constant? It's constant pressure. So both are energies. Energy measured at constant volume, that is energy. Energy measured at constant pressure is enthalpy. है ना? कुछ हार्ड चीज नहीं है enthalpy. तो बोल रहे एनर्जी एनर्जी है बस, तो थोड़ा डिटेल है उसमें, ऐसा नहीं सिर्फ एनर्जी. Then we have electron gain enthalpy. उसके बाद एक और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity. Okay. Effective nuclear charge is shown by, denoted by Z effective. Z is the nuclear charge, and a number of protons. Positive charge, nuclear charge. Effective means Z effective. Atomic radius, atomic radius. Then we have delta HI. Enthalpy, and which enthalpy? Ionization enthalpy. Then we have delta H, e.g. electron gain enthalpy. Electronegativity, this is noted by chi. If you remember the chi, that is the mole fraction chi from the first chapter, उसी का capital letter. Okay, so mole fraction chi is like this, and like this we have mole fraction, this is capital letter. Okay, chi. Now effective nuclear charge for everything, atomic radius for everything. Ionization enthalpy, it was used for metals, to study metals and the reactivity of metal, which metal is more reactive, which metal is not reactive. Ionization enthalpy. For non-metals, we used electron gain enthalpy for non-metals. Okay, now both of these metals and non-metals, metals and
non-metal, both of these were used specifically for ionic compounds, for the understanding of ionic compounds. Electronegativity, it is used for covalent compounds. The concept of electronegativity, it is mainly used in covalent compounds. Okay, so if someone is asking ionization enthalpy of non-metal, he's a fool. If someone is asking ionization enthalpy and they are talking about non-metals, then they are a fool, because ionization enthalpy was only for metals. If someone is talking about electron gain enthalpy for metals, they are also a fool. Okay, electron gain enthalpy, that study was done on non-metals, and wahan se fir electron gain enthalpy hai. Electron gain enthalpy is from non-metals only, is for non-metals only. Okay, and both of these are important for the study of ionic compounds. So these are the properties that we have to study. Now go and check your app. Is there any test available? Is determined by, Yes, sir, there's a test. by the above. What is the time mentioned? Ends in 39 minutes. Okay, it has started. Yes, sir. So it is basically from the previous class.